हाँ, हाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। आई होप आप सब लोग बढ़िया है एंड आई होप सब सब लोगों का वीक जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। हेलो, हेलो, हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम एंड गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आज पहन रहा हूँ मुंबई गलीज का ऑफिशियल हुडी। सो आपने अगर अब तक मुंबई गलीज का हुडी नहीं लिया है तो यार क्या कर रहे हो यार आप? मुंबई इंडियंस का हुडी हम लोग ने लाया है बेस्ड ऑन पब्लिक डिमांड। आप लोग चाहते हो कि यार मुंबई इंडियंस का कुछ टी-शर्ट आपको मिले या हुडी आपको मिले, तो मैं बहुत ही जल्दी से मुंबई इंडियंस का जो मर्च है उसका लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे और इसको मैं पिन कर देता हूँ। तो जो भी यहाँ पे मर्च लेना चाहता है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे वेबसाइट पे जाके उनकी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और हमने कुछ ऑर्डर शिप भी कर दिए। हम लोग को पिछले हफ्ते में काफी सारे ऑर्डर्स आए थे और उसके पहले भी ऑर्डर्स आए थे, उसमें स्टॉक आउट हो गए थे। तो यार लोग खरीद रहे हैं मुंबई गिलीज और आप सब लोगों का सपोर्ट जो है उसके बिना तो यार ये गेम कुछ नहीं है। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस कि यार आप लोग मुंबई गिलीज के मर्च खरीद रहे हो। बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि यार शार्क टैंक में क्यों नहीं जाते, शार्क टैंक में क्यों नहीं जाते। तो शार्क टैंक पे क्यों नहीं जाते, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्द। तो मैं वहां पे बता दूंगा कि यार मैं शार्क शार्क टैंक बोल रहा हूँ, मैं शार्क टैंक क्या होता है, शार्क टैंक में क्यों नहीं जा रहा हूँ, वो मैं उस वीडियो में बता दूंगा। कुशल हाय, कुशल बैद कैसे हो आप? ठंड लग रही है? ठंड लग रही है यार। एक्चुअली मुंबई का जो माहौल है अचानक से इतनी पता नहीं कहाँ से एकदम ठंडी बढ़ गई है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वेलकम टू द स्ट्रीम एंड यहाँ पे मैं एक्चुअली है ना आज वो नहीं है मेरा, क्या बोलते हैं, लाइट नहीं है। रिंग लाइट जो है ना वो मैंने एक्चुअली घर पे शिफ्ट कर दी थी, तो मैं भी अभी मेरे को टॉर्च लाइट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। होपफुली इससे थोड़ा लाइट क्वालिटी अच्छी हुई रहेगी। आज ऑफिस में है आप? यस, ऑफिस में हूँ मैं अभी। आप गेम क्यों नहीं खेलते? यार मैं गेम खेलना चाहता हूँ बट टाइम नहीं है मेरे पास, सच्ची में टाइम नहीं मिलता। पहले बीच-बीच में थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता था तब मैं खेल लेता था। अभी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं खेल सकता मैं। बट आई ट्राई यार, कभी वन्स इन अ व्हाइल अगर टाइम मिले तो फिर मैं गेम्स खेल लेता हूँ। अभी तो गेम बनाने में हम लोग ऑक्यूपाइड है, यूट्यूब करना है, मेक श्योर करना है कि गेमियन के अंदर के जो दूसरे गेम्स हैं वो भी अच्छे क्वालिटी के प्रोड्यूस हो। हम लोग कुछ पब्लिशर्स के साथ काम कर रहे हैं, अभी मुंबई गिलीज के लिए भी पब्लिशर ढूँढ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जा रही है बैकग्राउंड में, जिस वज़ह से मैं गेम्स नहीं खेल पाता। मंथली इनकम ऑन यूट्यूब, यार यूट्यूब से मेरा बहुत कम टाइम, आई वुड से कम टाइम भी जाता है और कम इनकम भी आती है। अभी 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, बट मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं होती। यूट्यूब मैं जस्ट एज़ अ हॉबी करता हूँ, जस्ट इस वज़ह से करता हूँ क्योंकि मेरे को नॉलेज शेयर करना पसंद है। दैट्स द ओनली रीज़न व्हाई आई यूज़ यूट्यूब एज़ अ प्लेटफॉर्म टू पुट आउट कंटेंट, दैट्स इट। मेरा इसमें कोई मॉनेटरी मोटिवेशन नहीं है। मेरे को यूट्यूब से इतने पैसे नहीं मिलते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Kushal Bed, member for 3 months. Amazing, Kushal. Thank you very much for being a loyal member to my channel. एंड आप सिर्फ मेंबर ही नहीं यार, सब्सक्राइबर भी बड़े तगड़े हो, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। फेवरेट शार्क दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। मेरे को फेवरेट शार्क कौन पसंद है पता है? अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल जो पीपल ग्रुप के सीईओ है, जिन्होंने शादी डॉट कॉम को फाउंड किया था, उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है एंड आई थिंक आई लाइक हिज एटीट्यूड यार। जो बंदा सामने दिखता है, जिस हिसाब से वो खुद को प्रेजेंट करता है, चाहे वो कपड़ों के सेंस में हो या फिर बात करने के सेंस में हो, ही रिस्पेक्ट्स द पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही पुट्स फॉरवर्ड हिज पॉइंट एज वेल। ऐसा नहीं है कि वो अपना पॉइंट नहीं रखते, बस शुगर कोट करते, नहीं। आई थिंक ही इज स्ट्रेट अप टू द पॉइंट एंड आई थिंक इज जस्ट अ वंडरफुल पर्सन फॉर दैट मैटर। सो आई लव अनुपम मित्तल। अश्नीर ग्रोवर का मेरा थोड़ा सा, आई वुड से, आई डोंट नो, आई मीन my favorite shark was is Anupam Mittal. I would just say. Piyush is also good. Piyush is good. अमन गुप्ता जो है वो एकदम ये मेरे को अभी एक मीम याद आ गया। मीम बनाया मेरे ऊपर किसी ने, ये गेम्स गॉसिप ने एक्चुअली, कि ऊपर लिखा है रॉकस्टार गेम्स, हम ओपन वर्ल्ड, ऐसा कुछ तो बनाया है उसने। और फिर बाद में नीचे वो अमन गुप्ता का डाला है फोटो और वहां पे लिखा है, अरे हम भी बना लेंगे
ऐसा। तो मेरा मेरा नाम डाला। हाँ, रॉकस्टार गेम्स इज नोन फॉर क्रिएटिंग बेस्ट ओपन वर्ल्ड क्राइम गेम्स एवर। मीनवाइल निखिल मालनकर, हम भी बना लेंगे। तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा। सो गाइज आप फॉलो कर सकते हो गेम्स गॉसिप को। अमेजिंग इंस्टाग्राम के ऊपर उनका प्रोफाइल है। एंड यू नो इट्स एक्चुअली मैनेज्ड बाय आयुष, हु इज लेजी असैसिन। सो लेजी असैसिन का खुद का ये पेज है गेम्स गॉसिप। गिव इट अ फॉलो, इट्स अमेजिंग। 20,000 फॉलोअर्स भी है उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अमेजिंग न्यूज मिलती है, अमेजिंग मीम्स वगैरह डालते रहता है। सो यू नो ऑल इन ऑल अमेजिंग पेज। सो गो फॉलो दैट पेज। शार्क ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। शार्क टैंक, शिवम, शार्क टैंक करके एक नया शो है, वहां पे एक्चुअली यू नो ये सब इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो है, फंडिंग किसी को उठानी होगी तो उसका रियलिटी शो बोलना थोड़ा सा गलत होगा। वही है यार, रियलिटी शो ही है, शार्क टैंक रियलिटी शो ही है ऐसे तो लोगों को फंडिंग मिलती है वहां पे। मतलब पांच पांच जजेस रहते हैं, उनको आपको पिच करना रहता है। जजेस स्लैश इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर रखा है। सो इट्स दैट शो बेसिकली। बजट 2022 देखा, बजट 2022 देखा, एज सच मेरा कुछ ओपिनियन नहीं है उसके ऊपर। यू नो वी गॉट अ कंट्री दैट इज बीइंग रन बाय the most qualified people who are put out there to manage this country. I think to a certain extent you have to go with the flow, and कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ reforms जो है, कुछ कुछ regulations जो है, those are actually much appreciated regardless of you know how they are looked at from a cosmetic perspective. जैसे क्रिप्टो का टैक्स है, which in a way बहुत सारे लोगों के divided opinions है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि it's good because at least it's coming under the regulatory scanner। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार इतना टैक्स क्यों डाल रहे हैं, etc etc। So I don't want to comment on that. I think you know I'm not a finance expert, so it would be wrong from my side to comment on that. But I think जो भी होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लेंगे यार। हाँ, गेमिंग एनिमेशन को भी कंसिडर करिए। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मूव। गेमिंग एंड एनिमेशन को कंसिडर किया, दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट मूव। सार्थक सर, क्या सिंपल कैजुअल गेम पॉपुलर हो सकती है अभी भी नॉन मल्टीप्लेयर? डेफिनेटली हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। मुंबई गिलीस कब बनेगा? बन तो रहा है अभी एक्चुअली, मूवीज ऑफ हिंदी हम बना ही रहे। सर आई सजेस्ट यू एनेक्समा यूट्यूब चैनल फॉर ओपन वर्ल्ड और जीटीए लॉजिक वीडियोस। ओके, थैंक यू अनुराग गवली। हाउ टू डेवलप अ गेम इन टीम, मेक अ वीडियो। श्योर केनिल, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू फॉर योर सजेशन। क्या मुंबई रिलीज के बाद दिल्ली के ऊपर गेम बनाने का प्लान है? नहीं दोस्त, अभी तो दिल्ली के ऊपर कुछ प्लान नहीं है। फिलहाल तो अभी मुंबई के ऊपर ही प्लान चल रहा है। इनफैक्ट हम लोग के नेक्स्ट दो जो पीसी गेम होने वाले थे, दोस आर बेस्ड गोइंग टू बी बेस्ड ऑन मुंबई इटसेल्फ। ऐसे मुंबई रिलीज प्रोलॉग है और मुंबई रिलीज फाइनल चैप्टर है। हाउ टू हैंडल मल्टीपल क्लाइंट्स? दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन शहजाद। देयर आर टू वेज। वन इज टाइम मैनेजमेंट, अमेजिंग टाइम मैनेजमेंट। यू नीड टू हैव दोस टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, और you hire more people. It's just as straightforward as that. You, अगर आपके पास बहुत सारा काम आ रहा है, that means that you are capable of executing. So you know you can actually hire managers who can then manage your team, and then you then have to you know look at enabling these managers to then hire staff under them. So it's like a structure जहाँ पे आप टॉप पे हो, then आपको रिपोर्ट करने वाले लेट्स से दो मैनेजर्स है, ओके। और दो मैनेजर्स के अंडर फिर एक प्रोग्रामर, एक आर्टिस्ट, एक गेम डिजाइनर, एक टेस्टर, व्हाटएवर, और दूसरे प्रोग्राम मैनेजर के अंडर वापस वो दो स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो इन सेंस आप क्या कर सकते हो, एक टीम को, एक मैनेजर को एक प्रोजेक्ट दे दो, दूसरे मैनेजर को दूसरा प्रोजेक्ट दे दो, या फिर आप एक ही मैनेजर को दो प्रोजेक्ट दे दो और उसको बताओ कि यार कैसे तुम इसको मैनेज कर सकते हो। सो इट्स नॉट अ फुल फ्लेज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। थोड़ा बहुत वहां पे बोल सकते हैं इंडियन जुगाड़ भी लगाना पड़ता है टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। और यू नो इफ यू आर टेकिंग इन प्रोजेक्ट्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आज कोई आता है आज की तारीख में, उनको एक एंडलेस रनर गेम बनाना है एग्जाम्पल के तौर पे, ओके। तो उस केस में रादर देन मेकिंग एन एंडलेस रनिंग गेम फ्रॉम स्क्रैच और फ्रॉम जीरो, बिकॉज बहुत सारे लोग फिर मेरे को पूछते हैं कि स्क्रैच क्या है, व्हिच मींस एसेंशियली दैट इफ यू आर मेकिंग अ गेम फ्रॉम जीरो, व्हाई create an endless runner game when it's already available as a source code elsewhere, right? So buy that source code and make modifications on that.
तो आप कितना ही इनोवेशन करोगे अगर वो सब स्टैंडर्ड आपके पास रिक्वायरमेंट आ रही है. So these are few tips and tricks, Shahzad. I hope this helps. I hope मैंने 3 पर्सपेक्टिव आपको बताया है. One is simply your time management, right? Second is hiring more people, which also works out to your benefit. Or third is relying on existing source codes to improve on. Akil, happy birthday to you in advance. Wishing you many, many happy returns of the day in advance. And take care. I hope you have a wonderful day tomorrow. Hey, Nikhil sir, I'm Avshesh. I'm a gamer. I would like to give suggestions in making of Mumbai release. Those are very much appreciated, Avshesh. However, I think internally we already have a good enough team. So maybe, and to be very honest, like जो भी suggestions है, Mumbai release has been put out in the public domain for quite a long time. So, with no offense to you, with no offense to your creativity, I think we have what it's required, right? We have been in this space for so long कि हम लोग को हर तरह के सजेशन आ चुके हैं, हर तरह के. इवन गेम प्ले रिवील, जब मैंने बोला था कि गेम प्ले रिवील के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो मैंने एक्सप्लिसिटली वहां पे बोली थी. जैसे कैरेक्टर मैंने बोला था कि कैरेक्टर भी वर्क इन प्रोग्रेस है, बट फिर भी वहां पे कमेंट्स में आ रहे सेक्शन में कि यार कैरेक्टर को इम्प्रूव करो, जबकि मैंने वो बोला है. सो आई थिंक व्हाट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, while I appreciate you wanting to contribute or talk about your ideas, I think internally we are self-sufficient with enough feedback that we will be able to execute on a good game. So thank you very much. I would like to acknowledge that you are willing to help us out. But I think we've got enough help at this moment, and we don't need any external help, at least right now. But thank you for that. Thank you very much. Can you please consider a dense forest-like area in Mumbai release? We do have something like that. Hello, big fan. Hi, Hell Jordan. How much value does a good programmer add to a company like yours? I think tremendous value, because programmers is what makes the entire product work, right? And if you don't have a good programmer, then you don't have a good product. It's as simple as that. A good programmer definitely adds ton of value. How many employees are you working for you? Right now we are a team of 45 plus people. Do you code as a CEO? Anupam Agrawal. I don't anymore. I used to code 2 years ago. I'm out of the programming loop now completely. I do not code at all during my day-to-day job. I'm more looking towards the managerial side of things. I look at establishing relations with multiple vendors, investors. So my involvement in that sense is more towards managerial side rather than technical side. So I don't code anymore, but I know how to code, because till 2019, that's basically what I did. So I know how to code, I know how to make games, and yeah. उमाकांत भालेराव, दादा तू एवढं डाऊन टू अर्थ कसा काय असू शकतो, ते पण मोठ्या कंपनीचा सीईओ असताना? आय थिंक it's just how I was groomed to be, and that's been my upbringing, to be kind to people, and that's just my nature. I'm good with people who are good with me. I'm and I think you guys are just supportive. I love you all, and I love coming over here talking to you guys. So that's the reason why I am happy and down to earth over here, and yeah. एंड गाइस, एक छोटा सा शाउट आउट देना चाहता हूँ. मुंबई गिलीज का जो हम लोग ने मर्च है वो लॉन्च किया है. आप देख सकते हो यहाँ पे मुंबई गिलीज का जो लोगो है, ये हुडी में पहन रहा हूँ. ओके, बाय द वे दिस इज अ हुडी. यहाँ पे 2 जगह पे लोगो है. एक यहाँ पे है मुंबई गिलीज, ओके, एंड एक पीछे है. अगर आप ये हुडी बाय करना चाहते हो, या फिर एक टी शर्ट बाय करना चाहते हो, या फिर मुंबई गिलीज के मास्क बाय करना चाहते हो, लिंक इज पिन्ड. यहाँ पे आप जाके शॉप चेकआउट कर सकते हो, मुंबई गिलीज मर्चेंडाइज. You'll be able to buy them, and guys, the demand has been amazing. We've been receiving orders for all these merchandises. तो इससे पहले कि जो existing stock है वो खत्म हो जाए, आप जल्द से जल्द जाइए और ऑर्डर प्लेस कीजिए, ताकि आपसे मिस आउट ना हो पाए कि यार, वरना फिर बहुत लोगों को ये लगेगा कि यार, क्योंकि हम लोग के पास अभी लिमिटेड स्टॉक है. इतना मैं बता देता हूँ, हम लोग के पास अभी बहुत लिमिटेड स्टॉक है,
और डिमांड क्रेजीली आ रहा है। सो जाइए मुंबई गिलीज के शॉप सेक्शन में, लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मैंने पिन करके रखा है, जाइए वहाँ पे बाय कीजिए। एंड वी हैव ट्राइड टू मेक द कॉस्ट, I think I would agree that the cost is slightly on a higher side, but at least at this moment that's what we can afford. उस हिसाब से हम लोग ने वैसा प्राइसिंग रखा है, तो इसमें हम लोग को एक्चुअली थोड़ा बहुत हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन भी देखना रहता है। We haven't put that big of a profit margin as well, क्योंकि हम लोग को दूसरी सारी चीजें भी देखनी रहती है। So I think the price that we've put onto the merchandise is very reasonable. Go ahead, हम लोग ने फैन पैक्स भी बनाए हैं। एक फैन पैक के अंदर आपको हुडी और टी शर्ट और मास्क सब कुछ इंक्लूसिव मिलता है। सो चेकआउट कीजिए एंड आई होप यू प्राउडली वेयर मुंबई गलीज मर्चेंडाइज एज आई एम। मैं मास्क पहनता हूँ मुंबई गलीज का, मैं हुडी पहनता हूँ, मैं टी शर्ट पहनता हूँ। ये देखिए, ये मैंने मास्क पहन लिया। आप ये मास्क खरीद सकते हो, आपके पास अभी सुनहरा मौका है। जाइए लिंक के ऊपर एंड गेट द ऑफिशियल मर्चेंडाइज ऑफ मुंबई गलीज फ्रॉम अस। Hey, new member, hi. Uh, I'm planning to open my app development company and I don't have any idea. यार वो मिस आउट हो गया चैट। शक्स। गेम में हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं क्या? नहीं, हेलीकॉप्टर का हम लोग ने नहीं कुछ प्लान किया। Can I get internship in your company? We are not looking for interns right now. Maybe perhaps later, somewhere down the line. Stay updated with our LinkedIn page though. That's where we kind of put out our requirements. So LinkedIn के ऊपर follow कीजिए Game On Studios को and stay updated with our company. How are you today? So my question is, in which year Mumbai Gillies in set? Yeah, see guys, with no offense to you guys, I would like to not reveal much about Mumbai Gillies anymore, because I think I've already talked about this a lot in many of my live streams. So I think Mumbai Gillies के जितने भी questions है ना, I'll try to avoid them, and I don't want to offend anyone with this stance of mine. I just feel that already मैंने बहुत कुछ बात कर चुका हूँ मुंबई गिलीज के बारे में. So it's essentially just a repetition of what I end up talking about in every stream, and it kind of dilutes away from the excitement for the game. So I don't want to talk much about Mumbai Gillies. I'll let that excitement stay. And I think I've answered all the questions there. I've answered all the questions that have been asked to me with Mumbai Gillies, with regards to Mumbai Gillies. 100K soon, yeah. Guys, 100K होने वाले हैं. 1 लाख सब्सक्राइबर्स। यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार इतने जल्दी अपने 100K हो जाएंगे। एंड मैं तो यार मैं गेम डेवलपर हूँ, मैं गेम्स बनाता हूँ। आई नेवर थॉट दैट 100K तक का एक माइलस्टोन मुझे देखने मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मेरे को लगता था कि यार मैं गेम्स बनाता हूँ। मैंने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी ऑनेस्टली कि ये इतना 100K तक मैं पहुंच जाऊंगा। बट नाउ दैट आई एम रीचिंग ओवर देयर, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार मजा आ गया, क्योंकि 100K, 1 लाख सब्सक्राइबर्स छोटी बात नहीं है। एंड आई हैव टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो एवरी टाइम मैं जब भी लाइव आता हूँ 100 लोग देख रहे हैं, अभी 100 लोग कॉन्करेंट वॉचिंग है मेरी। So thank you very much for that. Headless Warrior, thank you very much for 40 rupees super chat. AI and DS and animation, is it good for game development? Hey, thank you very much for the 40 rupees super chat. AI and DS and animation, I'm not aware of that. Is it an institute? I will have to do a little bit of research on that. Post that, I will be able to answer your question. But thank you very much regardless for the 40 rupees super chat. And I'm sorry that I was not able to answer your question. Game on speed run to 100 million valuation. Let's go. Thank you, Hal Jordan. Thank you very much. It's extremely kind of you. Can you continue C# tutorial? You know what? I'm actually thinking. मैं सोच रहा हूँ कुछ tutorials मैं करूँ, but in order for me to do that, I actually have to do a lot of time management. तो मैं सोच रहा हूँ कुछ courses में launch करूँ, जो मैं eventually announce करूँगा बहुत ही जल्द. बट कोर्सेस आएंगे एंड मैंने बीच में इसका पोल भी किया था, वुड यू गाइस एक्चुअली लाइक सम पेड कोर्सेस
from me, and आप लोगों का जवाब था कि आपको चाहिए ऐसे courses. So keeping that into account, keeping that in my, side of my head, I think that yes, I will come up with some courses, and I will come up with tutorials that will be helpful for anyone who wants to start out as a game programmer, who wants to start out in the game development industry, who wants to essentially just kickstart their career. तो ये सब मैं करने वाला हूँ. Just give me a little bit of time because अभी my entire focus is on making sure that Gameon's operations are functional and the team is working in harmony with each other. Aditya Jha, hello. Can you suggest which coding language to learn first? Chop, that's a wonderful question. I think the very first language, and this has been my constant answer, is that for you to learn programming is C++. I think C++ is a beautiful language, and I think definitely should treat that as your starting point to learn programming. And guys, आपका feedback लेके ना मैंने बाल कटवा तो दिए, बट मेरे को थोड़ा सा अजीब फीलिंग आ रहा है. मतलब पता नहीं यार, मेरे जब बाल लंबे थे तब कुछ लोग मेरे को बोलते थे कि ये क्या बाल है, ये ऐसे क्यों बाल रख रहे हैं. और फिर बाद में बाल कटाने के बाद बोलते कि यार अभी बाल क्यों कटा लिए, फिर करो तो क्या करो. Hey Vinod Bhatia, thank you very much for 100 rupees super chat. Thanks for motivation video 2005 made game for Konami. Now planning to make Dirty again. Hope we'll connect someday soon. Hey, most welcome Vinod, most welcome, and I appreciate you giving me 100 rupees super chat. And definitely, if something's aligned, then we can catch up. And guys, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई. आप मेरे को अगर इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते हो तो मैंने ना एक स्टोरी डाली है. आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर स्लैश admirer of my work or whatever you call it, उनसे मिला. एंड इट वाज वेरी रैंडम. मैं एक्चुअली एक मीटिंग में जा रहा था एंड वहां पे ये बंदा मिला एंड ही वाज लाइक आई वांट टू क्लिक अ पिक्चर. तो उसके साथ हम लोग ने पिक्चर क्लिक करी एंड मैंने उसकी स्टोरी डाल रखी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके चेकआउट कीजिए. द लेटेस्ट नहीं, दूसरी स्टोरी जो है वहां पे नितिन राणे करके एक बंदा है, उसने मेरे को मिला एक्चुअली. एंड इट वाज दैट वन ऑफ दोज मोमेंट्स कि यार थोड़ा अच्छा लगता है. मतलब जो सब्सक्राइबर्स आप हो यहाँ पे बात कर रहे हो टेक्स्ट पे, वो तो अच्छा है ही, बट कोई सामने आके आपको बोलता है कि यार आप निखिल मालनकर हो, आप मुंबई गिलीज वाले हो, तो वो अच्छा लगता है. और मैंने एक्चुअली ये पहना था, मैं जब बाहर था तो ये मैंने पहना था, मास्क मैंने पहना था, तो वो बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा. What aspects are you focusing on Mumbai Gillies? We are focusing on two aspects. One is the gameplay itself, definitely, that is primal. Second is the city, the way that it is depicted visually, because both these things are very important. ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस ग्राफिक्स के ऊपर फोकस करो और गेम प्ले अच्छा ना हो तो इतना मजा नहीं आएगा. So what we are doing is essentially working on both these aspects, wherein we are trying to come up with a good gameplay that complements the visuals, that in a sense works really well with the visuals as well. Nikhil bhai, are you planning to go to Shark Tank? यार मैं आपको मैंने पिछले स्ट्रीम में भी बताया था, मैं अगर शार्क टैंक में जाऊंगा ना तो अभी नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा 5 साल बाद शार्क बन के. मैं 5 साल बाद शार्क बन के वहां पे शार्क टैंक में जाऊंगा. मैं यहाँ पे ये वीडियो में बता रहा हूँ, आई एम एक्सप्रेसिंग माई डिजायर. 5 साल बाद मैं शार्क टैंक में शार्क बन के जाऊंगा. I know that is too ambitious a statement to put out in the public domain, but I'd love to do that. I was not in the last stream. Okay, that's fine, that's fine. यार पंगा यही होता है ना. See, आजकल क्या हो रहा है ना कि कुछ चीजें जो होती है वो रेपिटेटिव हो जा रही है. एंड आई एम ओके विद दैट. बस मेरे को है ना मुंबई के लिए रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो रेपिटेशन मजा नहीं आता फिर. एंड स्टोरी मैं नहीं बता सकता यार, मुंबई के लिए इसकी स्टोरी सीधा पूछ रहे हो तुम, स्टोरी नहीं बता सकते. सो स्टोरी वी आर हैविंग अ फोकस, ऑब्वियसली वो फोकस है, बट द मेन क्रक्स, मेन क्या बोलते हैं मसाला या जो भी है वो, दैट इज द गेम प्ले एंड द विजुअल्स.
And obviously story is like an extension of that, because story के ऊपर से आपका गेम प्ले एंड सब एलिमेंट्स बनेंगे. But these two are the aspects that we want to make sure that are right. मेटावर्स गेम डिजाइन कैसे करें यार, मेरे को उसका आइडिया नहीं है भाई. कैन यू एक्सप्लेन अस हाउ अ गेम पाइपलाइन वर्क्स? Absolutely, absolutely. So very first thing, whenever you get a game's idea, the very first thing that you need to do is write down that idea. That is called as step one, which is also regarded as the game design document. जो document आप बनाते हो, that is actually called a game design document, which in short is called GDD. Okay, game design document. ये होने के बाद, you then move on to the prototyping phase. What is prototyping? Prototyping is essentially building out the core game mechanic of your game that has the single most fun element of your game. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्पल रन की बात करें, so in that your running mechanic is something that is the core mechanic, right? So you create that, you test that out, and you have to build this very quickly, like in a matter of a week or 2 weeks at max. Once the prototype is locked, उसके बाद यू मूव इनटू प्रोडक्शन, बिकॉज अभी आपने डिसाइड कर लिया कि प्रोटोटाइप में हमको ये चीजें पसंद आ गई. You can move on to actually start building out assets and code the entire functionality. Then that is your production cycle. इसके पहले जो मैंने बोला that is pre-production, मतलब game design और prototyping that falls under pre-production. Then you move into production when you start building out the entire game. Then comes testing, right? And after that is where you actually start to roll out the game. सर व्हाट हैपेंड विद द मीटिंग विद रफ्तार? यार वो नहीं हो पाई, अनफॉर्चुनेटली अब तक नहीं हो पाई. वी हैड प्लान्ड अ मीटिंग दैट गॉट delayed because first meeting इसलिए delay हुआ because I had a personal family thing to attend to. After that we tried to schedule a meeting, but then that also got rescheduled. So I'm now waiting from him to let me know कि यार मीटिंग कब करे रफ्तार भाई. आप लोग पछाओ यार, रफ्तार भाई को बोलो कि यार मीटिंग कर ले जल्दी, क्योंकि हम भी रुके हैं बेसब्री से कि उनको हम लोग विलन की वॉइस ओवर में कास्ट करें. एंड खुद रफ्तार भाई ने भी बोला है कि वो ये करना चाहेंगे, बस वो मीटिंग नहीं हो पा रही है यार. रफ्तार भाई थोड़ा आप भी अगर देख रहे हो तो यार कर देते हो मीटिंग. नीड फॉर मैडनेस ऑटो, isn't your game depicted as middle class though? No, I don't think it is. It shows you the entire spectrum of the city in the exact form that it is. Um, it's got your smaller sections of the town. It's got slum areas. It's got high-rise building. It's got mid buildings as well. So it's got that whole spectrum captured. Yeah, it's not a middle class game, not at all. So how you made your icon on YouTube? I want to know it. So my YouTube icon was actually made by a talented artist. Her name is Alicia, and she also has her own page on Instagram. It's called Inked Pencil, INKEDPENCIL. So she made my channel icon, and yeah, that's how. I don't make all these artworks and all by myself. So it was made by her, and she was actually working at the time with us at Game On Studios. So yeah, it was made internally. Why your team don't make games like BGMI or survival mix game? So Avshish, it's just a matter of what you want to do, because not everyone wants to make a BGMI. Not everyone wants to make a racing game. Not everyone wants to make a story game. Not everyone wants to make a clone of Candy Crush. So it's just personal thing, your personal preference कि हमको वो चीज नहीं करनी है. There can't be like a justified reason for this. It's like saying कि यार आप I don't know, मेरे को एग्जांपल नहीं मिल रही है. Why you didn't go to Shark Tank India? संकल्प गुप्ता का क्वेश्चन. ये मेरे को वापस क्वेश्चन आया. ये आज की स्ट्रीम में तीसरी बार, आई डोंट थिंक तीसरी बार है, इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है. यार मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा यार, आप बेफिक्र रहो. मैं बना दूंगा. I accidentally said about Shark Tank. By the way, what are your reviews on Dying Light 2? Talks. I haven't played Dying Light 2, so no comments on that game as of yet.
May I call you in Discord? मेरा Discord बंद है यार. I don't use Discord at all actually. Literally, I don't use Discord. I just don't use Discord. मेरा जो Discord का community है, वो that is being managed by someone else. So I'm not using Discord in an active capacity right now. Who does primary art design for your game? We've got an internal team for that. Kritiman Oja, hello. Mumbai Gillies release date. Mumbai Gillies release date. We haven't announced a release date yet. It's going to be the prologue is going to come out in this year. That is end of 2022. Do you think there is a major difference between IIT and computer science engineering graduate and an average tier 2 college graduate? I would say yes, because IITians के सोचने का तरीका और नजरिया थोड़ा अलग ही होता है. तो I think yes, there is a difference, but you know टीयर 2 कॉलेजेस में से भी कुछ ऐसे गिने चुने स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको मे बी मौका नहीं मिलता आईआईटी में जाने का फॉर वॉट एवर रीजन, एंड दे आर equally as talented. So while you may argue that bulk of the talented people are in IITs, definitely that's true because they've struggled to get over there, and there are some amazing talents out there in these pristine institutes. I do strongly feel that even in tier 2 cities there are talented people out there who might not have gotten the chance to get into these prestigious institutes for that matter. Today is 22222 2222 2222 2222 2222 आज दो 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 है. आज 2 फरवरी 2022 है. That's amazing, यार. As you're explaining your game, it seems interesting. Thank you, Pranav. Thank you very much. I appreciate that. What makes a good gameplay? I mean, any important points? I think a good gameplay actually boils down to a scientific level wherein essentially you have to track what causes an excess dopamine rush in your brain. Now what I mean by this is बहुत मेडिकल हो गया. मतलब आप सोचोगे कि यार इसको मेडिकल टर्म्स कैसे आ गए, क्या बोल रहा है. सो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था इस टॉपिक के ऊपर, and whenever you experience joy, there's this chemical that is called dopamine which gets released in your brain, and that is essentially what makes you feel good. So to answer your question, what makes a good game design on a scientific level, it's that dopamine rush. But now you can actually extrapolate that and then define exactly what is causing you that dopamine rush. So it can be rewards, it can be a challenge, okay, it can be some sense of achievement that you've made. So a good gameplay design is something that balances all of these things in harmony with each other. That's what a good game design is. Your hairstyle are awesome. How can I have hairstyles like you? I think ये नहीं हो सकता. I think ये सिर्फ मेरा टैलेंट है. ये मेरा गिफ्ट है. टैलेंट भी नहीं बोल सकते. ये मेरा गिफ्ट है. मेरी हेयरस्टाइल मेरा गिफ्ट है. I don't think anyone can have hairstyle like me unless they are gifted themselves as well. I don't put in any extra work on my hair और मैं manage करने के लिए कुछ extra नहीं करता. It is just how it is, and I go with the flow. अच्छा गाइस, अभी 4 मिनट में मैं ना मेंबर्स ओनली चैट एनेबल करने वाला हूँ, जहाँ पे आप अगर मेंबर हो तो ही बात कर सकते हो. बिकॉज आप देख सकते हो मैं ट्राई करता हूँ कितने सारे चैट से उनको आंसर करना, बट मैं नहीं कर पाता. सो बट आप बने रहिए बिकॉज मेंबर्स जो है वो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे आपकी हेल्प हो सकती है और मैं फोकस तरीके से उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकता हूँ. Is Bounty Hunters idea came from Red Dead Online? No, not really. I mean, we are not looking at it from take ये game से inspiration लो, वो game से inspiration लो. It is just what makes sense for the game. It's just वो जो premise में है, वो जहाँ पे set है, उसी की वजह से हम लोग ने सोचा कि ये जो idea है वो हम लोग की game में thematically suit करती है, right? Thematically हम लोग का जो game है उसमें ये idea
फिट करती है। एंड थैंक यू अगेन फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। गेम डेवलपर्स को गेम के बग्स एंड ग्लिचेस को कैसे फिक्स करते हैं? दैट्स एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ डिबगिंग। अब डिबगिंग के भी अलग-अलग तरीके रहते हैं, हाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट बग। जैसे कुछ-कुछ बग्स जो रहते हैं वो लॉजिकल रहते हैं, कुछ-कुछ बग्स रहते हैं वो सरफेस पे आते हैं, जैसे यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, बट देन उसको फिक्स करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। सो द लॉजिकल एरर्स, जैसे अगर कुछ आउटपुट गलत आ रहा है, देन यू कैन ऑलवेज रिविजिट द कैलकुलेशन और एवरीथिंग। बट जो दूसरे सेंस के बग्स रहते हैं, जैसे कैरेक्टर तेजी से जा रहा है, उसका फिजिक्स इतना एक्ट नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, तो वहाँ पे मे बी यू हैव टू ट्वीक इन सम ऑफ द ग्रेविटी वैल्यूज। ये बहुत हाई लेवल बता रहा हूँ मैं, इससे डिटेल में जाना पड़ता है। But that's essentially like you solve bugs by debugging. Debugging process is actually identifying कि यार प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको उसको उसके रूट कॉज को ढूंढ के फिर उसको मैन्युअली फिक्स करना पड़ता है। सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एक्चुअली। इट्स नॉट एज इजी एज आई एम मेकिंग इट साउंड टू बी, बिकॉज मेरे पास तो अभी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है विद रिगार्ड्स टू गेम डेवलपमेंट एंड सो मैं जो बोलूंगा वो आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, सुन के बहुत लगेगा कि यार ये करना तो बहुत सिंपल है, बट एक्चुअल में करने जाओगे तो फिर इट्स नॉट एज इजी। योर थॉट्स ऑन यूनिटी इंजन? इट्स एन अमेजिंग इंजन यार। Onkar Lad, how do you see the future of AAA gaming in India? I'm an animator from Ubisoft India. Onkar, amazing, yeah. I'm glad to have you over here. I think Mumbai Gullies बोल रहा हूँ. I think India is progressing in the right direction. It just needs that time actually to breathe out the games that we are developing right now. Because the quality of games that we are making in India have begun to actually parallel the quality of games that are made in the West. So I see great potential for AAA games. I think there's still a little bit of time for us to achieve that level, but I'm confident that level will be achieved. एंड गाइस अभी 8 बज चुके हैं, सो मैं अभी जो मेंबर्स ओनली चैट है उसको एनेबल कर रहा हूँ, तो ताकि मैं जो मेंबर्स है अपने उनके क्वेश्चंस को इन अ मच मोर स्ट्रक्चर्ड वे और फोकस्ड मैनर आंसर कर पाऊँ। सो मेंबर्स जो भी मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, मैं एक और बार आइटरेट कर देता हूँ, मेंबरशिप की बेनिफिट्स भी है बाय द वे। इट्स नॉट जस्ट दिस सेक्शन ऑफ चैटिंग, मैं मेंबर्स ओनली वीडियो भी कभी-कभी अपलोड करता हूँ। मेंबर्स को एक मौका मिलता है एवरी मंथ कि एक रैंडम मेंबर को मैं मेरी तरफ से एक गिफ्ट बॉक्स भेजता हूँ, और पिछले महीने में पीयूष कुमार करके एक बंदा है, उसको ये गिफ्ट बॉक्स भेजा था। आई थिंक उसको रिसीव भी हुआ रहेगा अब तक। तो पीयूष, अगर आप चैट में हो तो बता सकते हो कि आपको रिसीव हुआ है कि नहीं, क्योंकि हम लोग टाइम हो गया उसको सेंड किए। और एवरी 8th ऑफ एवरी मंथ हम लोग मेंबर्स ओनली के जो मिस्ट्री बॉक्स है उसको अनाउंस करते हैं। सो अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है, मेंबरशिप स्टार्ट्स एट एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 59 रुपीस पर मंथ, दैट्स इट। मैं इसको बढ़ा भी नहीं रहा हूँ, इट्स जस्ट दैट। थैंक यू फॉर द गिव अवे। सो पीयूष आपको मिला है, पीयूष आपको गिफ्ट मिल गया है। पीयूष, आई वुड रिक्वेस्ट यू, एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप क्या कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो अभी उस मिस्ट्री बॉक्स का फोटो खींचिए और मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर टैग कीजिए। अगर आप वो कर सकते हो तो फिर मैं उसको शेयर करूंगा, एंड जस्ट बी अ गुड प्लेजेंट सरप्राइज फॉर क्योंकि मिस्ट्री बॉक्स में क्या है ये किसी को नहीं मालूम एक्सेप्ट आप। सिर्फ पीयूष कुमार को मालूम है कि यार मिस्ट्री बॉक्स में क्या है, तो ये मिस्ट्री को भी डीमिस्टिफाई करते हैं। पीयूष, अगर आप कर सकते हो अभी तो यार मजा आ जाएगा। और I'll come back to the questions. I'm sorry, मैं डिविएट हो गया थोड़ा। सर राहुल क्या पूछ रहे हैं, सर क्या 1 लाख में एक अच्छा सा सिंगल प्लेयर 2D गेम बन सकता है विद ओनली 1 मैप विद 5 कैरेक्टर्स एंड 10 गन्स where characters fly and fight with bots? It depends really. I think 1 lakh is a very small budget, but अगर आपके पास टीम ही वैसी है जहाँ पे आप एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो तो शायद बन सकता है, बट कॉम्प्रोमाइज बहुत होगा। आई थिंक 1 लाख बजट इज टू स्मॉल ऑनेस्टली, बिकॉज कोई भी गेम आपको बनाना है इट टेक्स एटलीस्ट 2 मंथ्स। ये आप मेरे से ले लो, लिख के चाहिए तो ले लो। अच्छे क्वालिटी का गेम, डिसेंट क्वालिटी का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइपर कैजुअल गेम्स, ओके? हाइपर कैजुअल गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कैजुअल गेम जहाँ पे आपको इतने सारी रिक्वायरमेंट्स है। आप ही सोचो, एक कैरेक्टर को बनाने में ही कितना टाइम जाता है, हफ्ते 2 हफ्ते तो कैरेक्टर बनाने में जाएंगे आपके, एक कैरेक्टर के पीछे।
ऐसे साइमल्टेनियसली आपको बहुत सारे लोगों से काम करवाना पड़ेगा। सो 1 लाख आई थिंक इज़ अ वेरी स्मॉल बजट। आई थिंक उसमें आपको और खर्चा करना पड़ेगा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। पीसी गेम्स में एड्स कैसे लगाएँ? पीसी गेम्स में एड्स लगाना थोड़ा-सा डिफिकल्ट है बिकॉज़ पीसी गेम्स यूजुअली जब हम लॉन्च करते हैं दोज़ आर प्राइस्ड एट अ प्रीमियम प्राइस पॉइंट। जैसे आप स्टीम के ऊपर कोई भी गेम्स देखते हो उसके वो आपको खरीदने पड़ते हैं। सो जनरली एक्चुअली हम लोग ने भी अब तक एड्स डाले नहीं है कोई भी पीसी गेम में बिकॉज़ हम लोग का तो मुंबई रिलीज़ ही पहला पीसी गेम है। तो वो चीज़ हम लोग ने एक्सप्लोर नहीं की बट एक चीज़ हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग इन गेम ब्रांडिंग स्पॉट्स बहुत लोगों को दे रहे हैं। तो आप वो एक तरीके से कर सकते हो कि आप ब्रांड्स को पकड़ सकते हो डायरेक्टली और उनको बोल सकते हो कि ये भाई मेरा गेम है, इसके इतने-इतने प्लेयर्स हैं, इसकी इतनी-इतनी पोटेंशियल ऑडियंस है। तो वैसे आप कमा सकते हो बट अदरवाइज़ एड मॉब ये सब का पीसी के लिए सपोर्ट तो नहीं है। सर अगर मुझे अपनी गेम कंपनी रजिस्टर करवानी है तो पूरे रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स में कितना खर्चा होगा? हाँ, दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट आई कैन आंसर। उसका मेरे पास आंसर है बिकॉज़ उसमें आपको कंपनी सेक्रेटरी को हायर करना पड़ेगा और मैं आपको यहाँ पे रेंज दे सकता हूँ। कॉस्ट इनके बीच में वेरी होगा। सो अ गुड रेंज टू रजिस्टर योर कंपनी इज़ एटलीस्ट आपको एक कंपनी सेक्रेटरी को हायर करना पड़ेगा तो 20 से 40,000 इन सम केसेस ऑप्शनल डिपेंडिंग ऑन योर नेगोशिएशन विद हिम मे बी 50,000 60,000 एट मैक्स। इतना रजिस्ट्रेशन का खर्चा। उसके अलावा 1 लाख रुपीस आपको कैपिटल डालना पड़ेगा कंपनी के अंदर। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम आपको 1 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल दिखाना पड़ेगा आपकी बैंक के अंदर एंड यू विल हैव टू हैव अनदर पार्टनर विद यू इन अ डायरेक्टर कैपेसिटी। ओके, सो जितना आप कंट्रीब्यूट करते हो इन दैट 1 लाख उस हिसाब से आपकी शेयर होल्डिंग का परसेंटेज डिवाइड होता है। बट आई थिंक दर्शन Darshit, I'm sorry. This is a process that can be better guided to you through a company secretary. तो I would say ये estimate है 20 से 60,000 के बीच में 20 to 60,000 and 1 लाख रुपीज फॉर योर शेयर कैपिटल। तो मान लीजिए अराउंड 2 लाख रुपए आपको लग जाएंगे कंपनी स्टार्ट करनी है तो जस्ट एक बफर आगे पीछे का कुछ खर्चा हो गया 2 लाख के अंदर बन जाएगी। 2 लाख भी एकदम हाई एंड बोल रहा हूँ मैं, उसके अंडर ही हो जाएगी कंपनी स्टार्ट। Which software should I use to learn sculpting? While I'm not an expert in sculpting, I would suggest you to learn either ZBrush or Maya. इसमें मैं और इलेबरेट नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम मैं आर्ट करता नहीं हूँ ऑन अ डेली बेसिस एंड मैंने हालांकि सीखा था थोड़ा बहुत आर्ट माया अकेडमी या एडवांस सिनेमैटिक्स में बट मैंने एक्टिवली आर्ट इतना किया नहीं है। बट सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो तो फिर ZBrush एंड मड बॉक्स इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट। यार 2 लोग ने मेंबरशिप ज्वाइन की है, कार्तिक गोस्वामी एंड बैडस्टर भाई। तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर joining the Nikhil Malankar club and welcome to the Nikhil Malankar club. You guys are eligible to get a secret mystery box from me. जो लकी मेंबर हैं उनको एक मिस्ट्री बॉक्स मिलता है दैट इज अनाउंस्ड ऑन 8th of every month. So thank you very much for joining the Nikhil Malankar members club and धीरे-धीरे अब यार मेंबर्स की भी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है चैट्स की, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ किसी स्पेशल डेट पर कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए क्या करें? वो तो आपको थोड़ा-सा सीएस कंपनी सेक्रेटरी के साथ ही बात करना पड़ेगा। कैसे वो आप रजिस्ट्रेशन डेट टाइम कर सकते हो। आई डोंट थिंक आपके पास वो डेट के ऊपर कंट्रोल रहता है, बट दिस माइट जस्ट बी समथिंग दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट आई डोंट थिंक ऐसा होता होगा। इट जस्ट टेक्स इट्स ओन टाइम। सर विंडो पे जो एक्शन मल्टीप्लेयर गेम है उनकी डेवलपमेंट कॉस्टिंग क्या होगी? यार उसमें तो बहुत खर्चा जाता है बिकॉज़ आपको वहाँ पे गेम सिर्फ गेम बनानी नहीं है, वहाँ पे आपको मल्टीप्लेयर एस्पेक्ट भी इंटीग्रेट करना है एंड एक्चुअली हम लोगों ने कुछ-कुछ काम किया है वो डोमेन में। तो मैं बता सकता हूँ कि यार आराम से आपको 5 लाख प्लस तो जाएगा ही, 5 लाख प्लस एट अ मिनिमम बिकॉज़ आपको गेम बनाना है प्लस उसका मल्टीप्लेयर एस्पेक्ट भी टेस्ट करना है। तो इसमें ना अलग-अलग तरह के लोग आपको लगेंगे, अलग-अलग तरीके के रिसोर्सेज बैंडविड्थ आपको लगेगी और उतना टाइम आपको देना पड़ेगा बिकॉज़ विंडो का जो इंटीग्रेशन है दैट दैट टेक्स एटलीस्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो 1 एंड हाफ मंथ तो चले जाएगा और उसमें बैक एंड फोर्थ होता है। सो यू हैव टू मैनेज ऑल दोस कॉस्ट्स एज़ वेल। So your cost essentially just boil down to your team boil down, team size and strength that you have. I studied an article that due to dopamine rush repeatedly, we are becoming numb to dopamine slowly. What do you think about that? That's an excellent article as well. I haven't read that article, but I think
eventually what happens is when you start rewarding yourself with something continuously, that thing itself becomes less rewarding. So it is true because for example, आपको कंटिन्यूअसली आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो वो अच्छी चीजें आप यूज टू हो जाओगे एंड यू विल काइंड ऑफ स्टार्ट टू नॉट अप्रिशिएट इट एज मच सो इट्स नेचुरल, इट्स बीइंग ह्यूमन. आई एम सॉरी, मैं वो ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहता, बट दैट जस्ट स्टेटमेंट केम आउट. इट्स जस्ट यू बीइंग योर ओन सेल्फ. That's human nature, that's essentially human nature. So it is what it is. Yeah, it is what it is. So those are my thoughts. Good luck for the game. I'm sure it will inspire the gaming industry in India. Thank you very much, Vikas. Thank you very much. Appreciate it. सर क्या मैं किसी गेम की ग्राफिक्स और मैप अपने गेम पे कॉपी कर सकता हूँ? आप कर सकते हो, बट थोड़ी बहुत ओरिजिनलिटी तो लाओ, बिकॉज अगर आपको ओरिजिनल नहीं बनाओगे तो लोग ही आपको गाली देंगे कि यार ये कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो, है ना? So I got into game dev internship. Rishi Maurya, wishing you all the very best. I think that's a great start, and I hope you learn a lot from this internship. I think that's a step in the right direction, and all the best. Yash Shastri, hi. Motera Studio, sir. How many way that the PC or console game earn? Quite a few ways actually. Like brand deals से कमाई होती है. They can crack brand deals. They can also price the game at a premium price point. फिर अभी recent times में premium games के अंदर भी in-app purchases आ गए हैं, marketplaces आ गए हैं. So these are a couple of ways that they can earn: branding, upfront sales, and in-app purchase structure. But that's not really looked upon well in terms of that. सर अगर मेरे पास एक गेम का आइडिया है तो उसके लिए फंडिंग कहाँ से लाऊं? सो राहुल, मैंने एक्चुअली इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई है, हाउ टू रेज फंडिंग फॉर योर कंपनी, हाउ टू रेज फंड्स फॉर योर कंपनी. उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने. So have you searched about total overdose and its dodge shooting mechanics? Oh, Piyush, I have not, unfortunately. I could not find the time actually. So I have not taken a look at that. I'm sorry. Mumbai release के any updates? No new updates except from for what we had told earlier. The only update is that काम चल रहा है, progress चल रहा है, and we are making sure कि हम लोग जो भी चीजें हो रही है, we are controlling the timelines and making sure that the quality is delivered. So उसमें थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ होते रहता है, आगे पीछे चल रहा है, बट ऑल इन ऑल प्रोग्रेस हो रहा है. क्योंकि अगर कुछ चीज अच्छी हो रही है देन दैट्स प्रोग्रेस. अगर कुछ अच्छी चीज नहीं हो रही है देन दैट्स अ लर्निंग दैट वी नो कि ओके चलो ये चीज अच्छी नहीं हो रही तो इसको रिविजिट करना चाहिए. तो वो अभी बैक एंड फोर्थ प्रोसेस चल रहा है. तो वैसे टाइप का अपडेट है, एक बहुत जनरल अपडेट है मेरे पास. प्रॉपर अपडेट तो नहीं है एज सच, बट या दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इन मुंबई प्लीज. सजेस्ट एनी सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग गेम वीडियो आपको बनाना है तो फिर मैं तो मेरी एंड पे आई मूवी यूज करता हूँ, या फिर कुछ लोग प्रीमियर प्रो यूज करते हैं. स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बस वो असेंबल करना है. सो प्रीमियर प्रो कैन बी अ गुड थिंग. अगर आपके पास मैक है तो फिर यू कैन यूज आई मूवी. And these two are the best softwares that I can think of. Guys, I'll just need to be excused for a minute. I'm sorry, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ. I've got a nature's call, to put it in a very decent way. So I'll be back in just a minute. Okay, मैं आ रहा हूँ. जाओ मत कहीं पे.
Okay, I'm back. I am sorry. मैंने 1 minute लिया members only time में से, so I will actually contribute, compensate for that. But nature's call था, emergency था, so I had to go. I'm sorry for that. मैं 1 minute extra, 2 minute extra in fact live रहूँगा in members only mode. Company can branding can be a way. Okay. Badster, welcome to the Nikhil Malankar Club. Thank you for joining the Nikhil Malankar Club. I think मैंने आपको already welcome किया है. सर मैंने C Sharp का एक कोर्स खरीदा है Udemy पर, but वो 2018 का है. वो Unity के न्यू वर्जन के साथ सही होगा क्या? I think आपको वो कोर्स कर लेना चाहिए because 2018 वाला जो वर्जन है उसका LTS वर्जन, Unity का LTS वर्जन मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन अभी भी एक्टिव है. So I think it won't go waste. आप वो कर लो, वो कोर्स कर लो आप. सर आप मिथपैट से क्या पैसे देके कोलैबोरेट करोगे? इफ नॉट देन हाउ? सो if it comes to that, then we'll be open to it. But I think Mithpat himself is very much excited about this project. I respect his time. I respect his audience that he's built. If he asks for a monetary compensation for promoting this game, we would be open to that. If he's willing to do it for free, यार मजा आ जाएगा. I think I would greatly appreciate that if that happens. But I'm open to any sort of potential future with Midpat because I see that he's built an amazing audience, and I think his audience will love what we have built. So it goes hand in hand, yeah. बाप रे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं. You don't have to control on it. So how bots work in game, and can I say set bots level like noob or pro in game? Rahul, yes, you can do that. Sir, मैंने सीखा. Okay, so bad sir, मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया. सर अगर मुझे मंथली 5 लाख अर्न करना है तो कितने डेली एक्टिव यूजर्स मेरे गेम पर होने चाहिए थ्रू एडवर्टाइजिंग? राहुल, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन. मैं क्या करूंगा ना, ये क्वेश्चन जो है मेरे को जनरली आता है कि एड्स से इतने इतने एक्स अमाउंट ऑफ यूजर्स पे कितनी अर्निंग होती है. तो दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक फॉर मी टू वर्क विथ. मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है राहुल. सो टेकिंग योर सजेशन इन माइंड, मैं एक्चुअली अभी वो मेरे कंटेंट वाली प्लानिंग वाली शीट पे डाल देता हूँ टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, हाउ टू कैलकुलेट योर रेवेन्यू फ्रॉम गेम्स. How to calculate revenue from games, ads in games. राहुल, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है? थैंक यू फॉर दैट सजेशन. ओके सर, यू हैव सर्च्ड अबाउट टोटल ओवरडेज. नहीं पीयूष, मैंने अब तक वो टोटल ओवरडेज को गेम को नहीं खेला नहीं है, देखा नहीं है. आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी आंसर भी किया था ये वाला पार्ट. सर ऐप्स में एक ऐड शो होता है जिसमें 5 सेकंड्स बाद क्रॉस करने का ऑप्शन आता है, तो क्या सर अगर उस ऐड पर क्लिक करेंगे तो ही रेवेन्यू होगा या उस ऐड को 5 सेकंड तक देखते हैं तो उसके ऊपर? सो रोहित, दो चीजें होती है, एक होता है इम्प्रेशन और दूसरा होता है क्लिक. तो इम्प्रेशन पे रिलेटिवली कम आपको पैसे मिलेंगे. अगर कोई उस पर क्लिक करता है वो ऐड के ऊपर तो डेफिनेटली आपका अर्निंग थोड़ा सा ज्यादा होगा. And K Naveen K, thank you very much for becoming a member of my channel. Welcome to the Nikhil Malankar Club. Can a person make mods of different games and make money like old days? And how does it affect Game Studio? I think you can make mods and you can make money out of it. If your mod gets super popular, you can actually price that mod, and additionally, you can incorporate some level of ads into your mod. So that will act as a revenue source for you. These are the two ways. I haven't made mods to make money yet, so I don't know the exact way how mods make money. But I think at the end of the day, modders are essentially just enthusiasts who love playing games, and then they make mods out of the pure love for the game. So I don't think modders make mods to necessarily monetize. At least that's not what I'm aware of at this moment. I might be wrong, but I don't know how modders earn money. How does it affect Game Studio? It does not. I mean, it really does not, because without a modding community, game studios would games for that matter wouldn't have been so much fun.
modders do makes the game much more fun to play. So I think existence of modders only positively affects the gaming studio, because at the end of the day गेम तो आपको खरीदना है, राइट? जब आप गेम खरीदोगे तभी उसको कोई मॉड करेगा. So that's essentially how it works. जब आपकी कंपनी न्यू थी तब आप रेवेन्यू कैसे अर्न करी थी? सो दर्शित, अमेजिंग क्वेश्चन है ये. हम लोग की जब कंपनी न्यू थी तो उस टाइम पे हम लोग को गेम्स से पैसे कैसे कमाते हैं इसका आइडिया नहीं था. तो इस वजह से हम लोग है ना दूसरों के लिए वेबसाइट्स और एप्स बनाते थे, उससे हम लोग पैसे कमा रहे थे. सो इट वाज मोर ऑफ अ सर्विस मॉडल जो हम लोग ने फॉलो किया था. ऑफबिट गेम्स, नमस्ते जी. पानी पी लेता हूँ. Sir, bro, C Sharp is good, or should I learn other language too? Naveen, I think C Sharp is wonderful and it is extensively used, primarily because it's the language that is used in Unity game engine. Okay, so Unity game engine के अंदर C Sharp use होता है, and that's the reason why I think it's a wonderful language to अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हो तो उसी लैंग्वेज से आप स्टार्ट करना कर रहे हो तो इट्स गुड. अदरवाइज आई वुड से सी प्लस प्लस अच्छा है, बट सी शार्प अगर आपने ऑलरेडी सीख लिया है, अच्छा लैंग्वेज है. उसको स्टॉप मत करो, उसके अंदर अपना जो नॉलेज है और एनहांस करो और उसको बढ़ाओ. सी शार्प इज डेफिनेटली गुड. सर, मैं एक एनिमे पर गेम बना रहा हूँ, क्या मुझे कॉपीराइट आ सकता है क्या? आ सकता है अगर आप किसी ओरिजिनल आईपी के ऊपर बना रहे हो, बिकॉज आईपी जो रहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लीगली प्रोटेक्टेड. ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि मतलब आप अगर इंडिविजुअल लेवल पे बना रहे हो, खुद के लिए बना रहे हो, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं है. बट जिस दिन आप उसको लॉन्च करोगे और उसके ऊपर ट्रैक्शन आएगी, जब और बहुत सारे लोग उसको डाउनलोड करेंगे, तब आपको दिक्कत होगी और तब ये कंपनीज आके आपको सू करेगी, विच इज नॉट अ गुड place to be in. Piyush, after this session, I don't know Piyush, I don't know, because अभी मेरे को निकलना है and I don't want to be dishonest with you. मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता कि यार मैं ये करूंगा. अगर याद रहा तो करूंगा, क्योंकि अभी इसके बाद अभी मैं ऑफिस में हूँ. मैं लिटरली ऑफिस में अकेला, पूरे ऑफिस में मैं अभी अकेला हूँ. मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो अभी मेरे को एक्चुअली निकलना है घर पे जाने के लिए, तो शायद मैं नहीं देख पाऊंगा. To be very honest with you, I don't want to sugarcoat anything. SL Production, welcome to the Nikhil Malankar Club. Sir, कैसे हो? Yohan Khan Entertainment, I'm good यार. I hope आप भी ठीक हो. How do you publish our game on platform like Winzo, MPL, MX Player, etc., and how much we earn? So how much you earn, that is entirely dependent on how many users you are able to get for your game. How do you publish a game on these platforms? You have to actually get in touch with their team. And they are actually looking out for new content every once in a while. So get in touch with the team, start talking to them, and then वो खुद आपको बताएंगे कि यार कैसे आपको ऑनबोर्ड करना है. एमपीएल का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है, बिकॉज एमपीएल की जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे गेम्स पाइपलाइन में है. बट इन अ सेंस, हाउ डू यू स्टार्ट टू डेवलप गेम्स फॉर देम इज सिंपली बाय गेटिंग इन टच विद देम. तो आपके गेम्स एमएक्स प्लेयर पे कब तक आएंगे एंड हाउ डू दे अर्न इन एमएक्स प्लेयर? So I'm not sure about the revenue strategy for MX Player. We have initiated discussions to get our games onto the MX Player platform. I think it is mostly by the way of ads, because उनके पास बहुत सारे impressions आते रहते हैं. So it's that ad-based model. I'm still unsure of their revenue model. I'll just we'll have to see जब game live जाता है तो उनका कैसा structure होता है. So please start the short interview of your core team so that we know their background, important role played. ये वो eventually होगा. I'm not doing that right now. Shorts videos जो है, because see, they are occupied in production, okay, and YouTube is a personal motivation for me. दूसरे लोग को शायद कैमरा पे आना इतना पसंद नहीं हो, so I don't want to force anything on them. That's the reason why I'm not involved. मैंने vlogs में पहले ना ऑफिस को कवर करने का सोचा था, but then that essentially just disturbs the entire production flow. तो वो मैं नहीं चाहता. Okay,
So that's why I'm not doing that at this moment. But that's a great suggestion. So I want to become your staff. Anyway, for that you'll have to get in touch with my HR. And just send in your resume on hr@gameon.in or suraj@gameon.in. And then if there is any requirement, then we'll contact you and we'll take this forward. सर क्या एक अच्छा ऑफलाइन 2D हाइपर कैजुअल गेम 1 लाख में डेवलप हो सकता है? यस रोहित, यस। अच्छा ऑफलाइन 2D हाइपर कैजुअल गेम इजीली 1 लाख रुपीस के अंडर डेवलप हो सकता है। आई कैन गारंटी दैट। गेम्स करना चाहिए कि नहीं? गेम्स नहीं होता दोस्त, गेम जैम होता है। आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, गेम जैम में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। In Unreal Engine, can I use C Sharp, sir? No, you cannot. In Unreal Engine, you can use C++. SL Production, welcome to the Nikhil Malankar Club. If I want to make a game on Indian Crisis like 2611, can I face any issue? I think if you are able to portray it in a positive light, then I don't think you will face an issue. But that subject itself is very risky, because it was a tragic day. Yeah, it was 2611 was such a tragic day, and it is remembered by us all in very sad way, sad tragic way. That's just how it is. So if you want to make a game on that subject, you have to be very careful first of all, because it might end up offending someone. And some people actually lost their loved ones over there. If you're able to execute it well, obviously creativity has its own freedom, but that freedom should not come at a cost of hurting someone's sentiments. And I think attempting something on 2611 might potentially do that, if not attempted in a good way. Having said so, I think there are movies attempted on that topic, which were executed beautifully. That's why they did not get any backlash as such. But if you were to attempt a game on that topic, I would urge you to do your research and be careful of how you portray that narrative. सर कोई बंदा अकेले कंपनी खोल सकता है 1% कंपनीज भी होते हैं। व्हाट इज योर एज? माय एज इज आई एम 27 इयर्स ओल्ड और अगले महीने में 28 का होऊंगा। तो आपने मेरा क्वेश्चन लिया था दैट हाउ टू बिकम योर स्टाफ। सो यूहान, मैंने बोला आपको कि हम लोग की जो टीम है, हायरिंग जो है, उसके लिए आपको मेरे एचआर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। hr@gameon.in ये ईमेल आईडी है, और suraj@gameon.in। अगर हम लोग की रिक्वायरमेंट रही तो हम आपको हायर करेंगे। अगर आपका प्रोफाइल हमको अच्छा लगता है तो आई कैन नॉट गारंटी यू कि हम लोग आपको हायर करेंगे, बिकॉज hiring is a decision that is based on a lot of factors and you will have to go through multiple interview rounds. So I cannot guarantee you that you will become a staff, but I can enable you with the प्रोसेस कि ये प्रोसेस है। तो 2 ईमेल आईडी मैंने आपको बताया, hr@gameon.in एंड suraj@gameon.in। उसके ऊपर अपना प्रोफाइल मेल कीजिए एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट, विल गेट बैक टू यू। सर कब तक आएगा आपकी गेम MX प्लेयर पे? आई थिंक अराउंड दिस मंथ और मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट मंथ। मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट मंथ तक आ जाएंगे। Can you talk with me on Google Meet for half an hour at any day, anytime? So Piyush, I do have the consultation sessions. You can actually book an appointment with me. Half an hour would actually cost you a little bit amount, and that's just purely out of me not having the time bandwidth to have casual discussions, to catch up. So I think you can book an appointment. I will officially announce how you can do that in a separate video, because अभी at least ये हफ्ते के लिए तो मेरा पूरा time packed है, तो ये हफ्ते तो कुछ हो नहीं पाएगा। अगले हफ्ते I will make an announcement for that particular segment, and then you can book an appointment accordingly. Arun Banerjee, hi. सर कुछ हाइपर कैजुअल गेम्स के नाम बता दो। सोप कटिंग, स्टैक,
वुडू के आप बहुत सारे देखो, वुडू के कौन से गेम्स है, वुडू एक हाई कैजुअल पब्लिशर है, paper.io, hole.io, Flappy Dunk, Color Road, Stack Jump, Baseball Boy, Planet Bomber, Rolly Vortex, Ball Blast, Moon Pioneer, Rock Climber, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे. Is 7 or 8 out of 10 a decent score for your PC title? It's 8 is god level, 7 is good enough. So yeah, it's a decent score, I would say. Can you make a video on published games on Winzo or multiplayer, etc.? I think making a video on that part would be difficult. I don't think how I can make that because it's a complex process. बहुत सारे steps involved है. What I can do that is I can actually have someone from Winzo or MX Player come onto my channel and give their interview जहाँ पे ये सारे processes मैं answer करवा सकता हूँ. So instead of making a video on how to publish a game on these platforms, I can get someone from the Winzo or MX Player team to come onto my channel. मैं मेरी टीम से बात करके वो करवाता हूँ, शेड्यूल करवाता हूँ. तो वो इंटरव्यू करवा सकता हूँ मैं. तो वो मैं करता हूँ Motera Studio, taking your suggestion. Can we apply a game idea for patent or copyright? You can, you most definitely can. What is the cost for appointment and how can I get an appointment? So for 30 minutes it's 999, 999, and for 1 hour it's 1999. That's 1999. I will pass on the links and all to you next week because अभी अभी ये हफ्ता मैंने बोला जैसे थोड़ा सा packed है. But that's the cost. 30 minutes का, and I've done these in the past as well. मैंने past में भी ये सारे sessions किए हैं. So I can actually provide good value to you. अगर आप one-on-one consultation करते हो तो my sole aim is to help you out with whatever query you have. तो सिर्फ मुंबई गिलीज के डिस्कशन ही नहीं, अगर आपको कुछ जेन्युइन डाउट्स है रिलेटेड टू गेम डेवलपमेंट, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट प्राइस पॉइंट एंड इट्स आई हैव केप्ट इट रिलेटिवली लो. मतलब यूजुअली अगर मैं देखने जाऊँ तो मेरा टाइम जो है इट इज आई हैव कम टू रियलाइज दैट इज इट्स मच मोर वैल्यूएबल. I don't want to sound arrogant with this. I hate speaking in this way, but I think that it's a reasonable price point for the value that I bring in to any conversation around game development. So that's the cost, and yeah, I'll help you out with whatever you can. You have your query as well. So 8:30 हो गए. As I had promised, मैं और 2 मिनट और एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ. So requesting members, अभी आपके जितने क्वेश्चन है अभी यहाँ पे इसको खत्म कर दीजिए. अगले हफ्ते मैं वापस आऊंगा. मेंबर्स ओनली चैट तभी भी होगा, वेडनेसडे टू वेडनेसडे स्ट्रीम्स होते हैं. सो अभी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आंसर करता हूँ. उसके बाद नेक्स्ट वीक वापस कनेक्ट करते हैं. बैटस्टर का क्वेश्चन, सर मैं 13 साल का हूँ, क्या मैं फुल गेम डेवलपर बन सकता हूँ या फिर क्या मैं अपनी एक कंपनी खोल सकता हूँ? सो बैटस्टर, आई वुड से पहले 13 साल के हो, आप अपना जो एजुकेशन है उसको फिनिश करो. उसके बाद मेरा एक ही सजेशन रहता है कि यार जब भी कंपनी स्टार्ट करनी है ना, तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले पहले एम्प्लॉय बनो, किसी के लिए काम करो. क्योंकि जब आप किसी के लिए काम करते हो ना, तो आपको तब पता चलता है कि यार एफर्ट्स क्या-क्या रहते हैं. तो मेरा यही एक सिंपल एडवाइस रहेगा, पहले तो आप एजुकेशन को फिनिश करो, बिकॉज़ लीगली जब तक आप 18 साल के नहीं होते तब तक आप कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते या फिर कुछ नहीं कर सकते. 13 साल के हो तो अभी सीखना स्टार्ट करो, सीखो, ओके? सीखो, सीखने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, बट अभी काम करने जाओगे तो यार आपकी एजुकेशन अफेक्ट होगी एंड बेसिक एजुकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. So do that, and I wish you all the best, Badster. Thank you very much. Making vlogs can give us somehow your company works in the back end and some money recorded, somewhat like Linus Tech Tips. Sorry for dropping some other YT channel. No, that's fine. So sneaky means I do not have the luxury to do that right now because अगर मैं वो करूँगा ना तो actual production disturb हो जाएगा. Because then आप सोच सकते हो कोई काम कर रहा है, उसके मुंह पे आप जाके कैमरा डाल रहे हो तो उसका पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा. So that's the reason why I'm not doing it. I did it for a while last year. मैंने vlogs वगैरह किए थे, but eventually it just screws up the entire quality of work. And I don't want to do that, especially with so much going on with regards to Mumbai release right now. So that's the reason why I'm not doing vlogs. So please provide your internship opportunity in your studio. It will be really helpful for students and freshers. So although we are hiring aggressively, but we have to make sure that we have a balance between interns and senior guys. We cannot hire interns in bulk because वहाँ पे कहीं ना कहीं पे requirement नहीं है. Right now we are hiring senior guys.
आगे जाके अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, we will be updating that onto our LinkedIn page, so stay updated with the LinkedIn page. Hi Nikhil bhai, my name is Siddharth Lal. I'm a video editor. How do I contact you for game testing and training under you? I don't think game testing and training, you should do game testing and training. I think you should focus on video editing if that's your forte. If you want to switch, then that's a different story. Game testing and training under me, I think, I would not be able to train you in game testing. I can provide you with a job opportunity, but that's also based on our requirements. What I would say, I would give the same advice as I gave to Johan is send us a mail. Send us a mail. दो email ID है, एक है hr@gameon.in, दूसरा है सूरज suraj@gameon.in. ये दो email IDs पे आप अपना resume भेज दीजिए. And personally, SL production, I would say, if you are good at video production, video editing, stick to that. Don't switch your career pathway entirely to an entirely different thing. And that's also subjective advice, because if you've made your mind कि मेरे को ये करना ही है, तो go ahead and do it. But yeah, and guys, I have given 2 minutes more to what I had promised. I apologize, मेरे को 1 minute के लिए nature's call आ गया था. I had a wonderful time, guys. So I think I can't get an appointment because for me the price is too big. I can understand that, Piyush, and I'm sorry that I will not be able to talk to you, because it's just in terms of my own time bandwidth, it's not possible for me to schedule talks, because मेरे को ये जो requests regularly आते रहते हैं. So I hope someday we will talk. Okay, and I'm pretty sure, Piyush, your conversations are around Mumbai Gullies. So it's fine, चलेगा. Mumbai Gullies के बारे में तो बाद में भी बात होती है, और अगर कभी हम रियल लाइफ में मिले आसपास, तो तब बातें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. तब तो फ्री में बात कर लेंगे. ठीक है, चलो guys, I think this was wonderful. I will just end this stream now. अभी मैं सबके लिए चैट एनेबल कर देता हूँ, ताकि मैं सबको बाय बाय बोल सकूँ. आप बाय बाय बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑब्वियसली बातचीत खत्म हो रही है. बट thank you guys. I think you guys are a wonderful audience. And just before I go, Mumbai Gillies का जो merch है, you can see I'm wearing a Mumbai Gillies hoodie. इसके यहाँ पे एक Mumbai Gillies का logo है, and यहाँ पे एक Mumbai Gillies का logo है. तो this is available on our website, जिसकी जो मैंने पिन करके रखा है ना वो लिंक, उस पे जाइए, वहाँ पे अवेलेबल है. So go ahead and buy the official Mumbai Gullies merch. जल्दी से बाय कीजिए यार, क्योंकि यार बहुत सारी डिमांड आ रही है, काफी सारे लोग बाय कर रहे हैं, और पिछले हफ्ते भी बहुत सारे लोग ने बाय किया, अभी भी लोग बाय कर रहे हैं. सो जल्दी से जल्दी जाइए, वरना यार स्टॉक खत्म हो जाएगा, और फिर आप सोचते रहोगे कि यार क्यों अभी खत्म हो गया. So go ahead, buy the official merch of Mumbai Gullies. There are some amazing quality hoodies, t-shirts है, और masks है. So go ahead, check it out. And guys, thank you. इसी के साथ मैं अपना outro बोल देता हूँ. That's it. I've been here for 30 minutes. Manav, thank you very much for staying with me here. What is the difference between giving? चलो sorry, मैं actually questions वापस read करने लग जाता. Guys, but मेरे को अभी निकलना पड़ेगा, because मैं ऑफिस में लिटरली अकेला बंदा बैठा हूँ, and I have to go now. घर पे भी जाना है, आराम करना है, कल सुबह वापस आना है. So that's it for this stream, दोस्तों. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए. मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ. मैं गेम्स और गेम रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाता हूँ. इस वीडियो के लिए इतना ही, इस लाइव स्ट्रीम के लिए इतना ही. मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और दोस्तों सोने से पहले ब्रश करना मत भूलिएगा. दांतों का ख्याल रखना जरूरी है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है. With that in mind, love you all, take care, and love you all. Ciao, bye bye.